Hi there, welcome to my channel. My name is Funny and thank you for tuning this channel. I have created these channels to help people to power their lives and add value so that everyone discover their true potential. It's my genuine effort to enhance the lives of people who truly wanted to discover themselves in this new digital era. As I discussed in the earlier video that I'm going to tell you that how you will be able to build your website by your own. आप अपने से ही अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पर आज हम लोग फर्स्ट सेशन में ये देखेंगे कि आप अपने से कहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं। तो सिंपली आपको शुरू करने से पहले करना चाहूँगा रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट यू विल बी गेट नोटिफिकेशन whenever I release a new video like this. And if you like this video, do hit like button and don't forget to share with your family and friends. So let's get started with the first series of this course. So simply आपको पहले आना है गूगल पे आने के बाद आपको पहले ही चेक करना है। आप ऐसे जैसे ही आप गूगल में सर्च करते हैं you just can check it out through how to get domain name. सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में दिखाई देगा। यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जो दिस इज एन पॉपुलर ऑप्शन विच इज GoDaddy. एवरीवन गोज टू GoDaddy and they get their domain, but you won't get here the free domain. So here I'm creating videos to teach you. That's why I'm not going to get domain from GoDaddy. I'll try to get a free domain which will be completely free domain. So वहाँ से हम लोग वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ करते रहिए जैसे कि मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, so that you will get practical knowledge once you will do along with me. Side by side you can open this video and you can practically you try to do whatever I'm showing over here. Then only you will be able to get more insight of this course. Else simply watching this video it's not going to help you. Till that time you will not do the practical thing. So मैं ये GoDaddy से अभी डोमेन नहीं ले रहा हूँ। सिंपली मैं देखूंगा कि गेट फ्री डोमेन, यहाँ पर मैं चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बैट्रिक्स डॉग टीके, सो यहाँ से भी आप फ्री मिल सकता है। लेकिन मैं सिंपली आपको बताऊंगा आप इस वेबसाइट को डालिए FreeNOM। यहाँ से आप फ्री से आप अपना वेबसाइट ले सकते हैं। सिंपली आप इसको क्लिक करके आप नेक्स्ट विंडो में आप खोल सकते हैं। यहाँ जा कर के आपको जो भी आपका URL है, जैसे कि आपको जो भी चीज़ का आपको URL आपका वेबसाइट बनाना है, वट एवर URL यू विल टाइप, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर FreeNOM लिखा हुआ है, freenom.com। आपको यहाँ पर .com .in ये सारे नहीं मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए मैं अपना डोमेन नेम यहाँ पर टाइप करता हूँ। अगर आपने अपना डोमेन नेम अभी तक नहीं सोचा है तो थिंक एंड टाइप इट हियर दैट वट एवर डोमेन नेम यू वांटेड टू क्रिएट, सो दैट ऑलवेज रिमेंबर वट एवर डोमेन यू आर चूजिंग। आपको ये क्लियरली ध्यान देना है कि जब भी अपना डोमेन आप चूज कर रहे हैं वो ईजी टू रिमेंबर होना चाहिए और आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। Whatever business you are doing, that should be reflect with your domain name. So the way this FreeNOM is saying a name for everyone, so that way only you need to choose your domain name. So simply I am typing my own domain name, whatever domain name I am trying to get it from here. So you also think your domain name. If you have not thought about your domain name, and you can type it here. You can till the time you can pause this video and accordingly you can resume the video. So I am typing my domain name. So this is a like. अब मैंने यहाँ पर अपना डोमेन नेम डाल दिया है। डोमेन नेम डालने के बाद मैं चेक एबिलिटी भी नहीं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही देखेंगे यहाँ पर .tk विच इज़ फ्री, आपको ये फ्री है। आप यहाँ से फ्री में ये डोमेन ले सकते हैं, लेकिन आपका .com या .in आपको नहीं मिलेगा। आपको ये सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे। TK हो गया, ML हो गया, G है, जो कि जनरली यूज़ में नहीं आता है, लेकिन आपको अगर सीखना है तो इस तरीके से आप यहाँ से अपना फ्री डोमेन नेम ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे .com तो .com के लिए आपको नियर अबाउट $8.38 आपको पे करना होगा। .net जो कि बहुत सारे पॉपुलर ये डोमेन नेम्स है, जैसे कि .org, info, .nl। अगर आप स्पेसिफिकली अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्पेसिफिकली .com पे जाना चाहिए, ना कि ये सारे फ्री पे। तो सिंपली मैं .ml को चूज करना चाहता हूं तो गेट इट नाउ पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। सिलेक्ट होने के बाद सिंपली आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली एक ऑप्शन दिखाई देगा।
सो यस ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीरियड, जो कि पीरियड है आपको 12 महीने तक आपको ये फ्री मिल सकता है। अगर आप 12 मंथ्स तक करेंगे तो फ्री है, आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोर देन 12 मंथ्स के लिए लेंगे देन यू हैव टू पे वट एवर द मनी दे आर आस्किंग फॉर। सो आई एम जस्ट बिल्डिंग दिस वीडियो टू टीच यू, दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग इज 12 months. So let's continue here. The moment I hit the continue button, then this window will open. Then accordingly you will get an option that whether you need to verify with your email address or you wanted to go with the Gmail or continue with the Facebook. So I'm like inputting my email address here, so you also input your email address, then accordingly we will be able to go to the next step. So I have inserted my email address. Now just you need to click the verify my email address. So verification link sent to your email address. The link is valid for 24 hours. Go to your email box and click on the link. So अब ये अपना ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कह रहे हैं। जो भी ईमेल एड्रेस मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, उस ईमेल एड्रेस को ये वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद मैं चेकआउट कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, 0 USD, बट आई नीड टू वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस फर्स्ट. So I'm going to verify my email address, then let me log in, then I'll show you to my Gmail account. So you can see here this I have received an email from FreeNOM. So simply I'll open this email. तो मैं यहाँ पर जो भी लिंक है इस ईमेल को कंफर्म करने के लिए उस लिंक को क्लिक कर रहा हूँ. Then once I will click that link, then this page will open, review and check out. Now I'll be inputting my details over here. जो भी अपना नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस, जिप कोड, सारा डिटेल मैं यहाँ पर डालता हूँ. तब तक मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ. वंस आई विल कंप्लीट दिस thing, then again I will resume this video, then accordingly you also fill these details, then accordingly you all also can check it out. So I have inputted all my details, then I have inserted the password also, that whenever you wanted to check your domain details, then you will be able to get through from this site. So that's why you need to create your account over here. So that's why they are asking for the password. I have inserted the password also. Then you have to click this checkbox. I have read and agreed to the terms and condition. Then simply you need to click complete order. आपको simply इसको complete order में click करना है. So here we have received the order confirmation mail. Thank you for your order. You will receive a confirmation email shortly. Your order number is so and so. So this domain has been already booked. ये domain book हो चुका है. अगर आपको इसके बैकएंड में अगर सारी चीज़ें देखना है तो माई डोमेन में जा सकते हैं, सर्विसेज में जा करके वहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ डोमेन्स जो आपने बुक किया हुआ है वो सारे डोमेन्स दिखाएगा. जैसे कि अभी हम लोगों ने ये डोमेन को बुक किया हुआ है तो ये डोमेन यहाँ पर आपको दिखाएगा. Here you can see that this domain has been already booked. Registration date is 9/9/2020, so it will be expired by 9/9/2021. Type free manage domain. So simply I would like to show you, if you go to this domain, and let's see what will show over here, because we have already got this domain. So let's see. So this site can't be reached because IP address could not be found, because we have not hosted this as of now. That's why this sort of message we are getting here. Now this domain has been belongs to us. If you will check once again here, then you won't be able to book this domain. Once we will get this domain detail, we need to host the domain in our server area. So in the next session we will see how we can manage this domain. So in the next video we will see that how we can host our purchase domain. If you like this video, hit the like button and don't forget to share with your family and friends.